हेलो फ्रेंड्स मु आपको स्वागत जनाऊँ लेट्स गेन एजुकेशन को। चलतु आज आम डिस्कस करवा B.ed फर्स्ट सेमिस्टर रो पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट 4 आज आम पढ़ा। देखो यूनिट 4 रे कौन रही आमर एडोलेसेंस आज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। देखो एडोलेसेंस पीरियड रो ट्रांजिशन आम आज पढ़ा। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स इन एडोलेसेंस। देखो एडोलेसेंस जो पीरियड रे तार कौन आवश्यकता रही आउ तार वैशिष्ट्य बा कैरेक्टरिस्टिक कौन रही चलतु आज आम पढ़ा। देखो द वर्ड एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेसेंस ADOLESCEAR which means to grow। देखो जो एडोलेसेंस आमर वर्ड टी रही तार लैटिन वर्ड होची कोन ना ADOLESCEAR which means to grow जार मीनिंग होची टू ग्रो करबा। देखो द एसेंस ऑफ द वर्ड एडोलेसेंस इज ग्रोथ एंड इट इज इन द सेंस दैट एडोलेसेंस रिप्रेजेंट्स a period of rapid growth and change in nearly all aspects of child's physical, mental, social and emotional life. It is very crucial period of one's life as the growth achieved, the experience gained and the relationships developed at this state determine the complete future of an individual। देखो ये कौन कही देखो ये पीरियड रे कौन होता है ना एडोलेसेंस जो माने से मानकर ग्रो बहुत स्पीड होता है रैपिडली तंकर ग्रोथ होता है आउ तंकर जो फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल जो लाइफ गुडा अच्छी से गुडा मध्य चेंज होता है आउ बहुत डेवलप करिथाय जल्दी तंकर। देखो ने आउ कोन ना तंकर जो लाइफ अच्छी ग्रोथ जो अचीव करिया पे सेटा आउ से माने बहुत एक्सपीरियंस गेन करिथांती आउ तंकर जो रिलेशनशिप रे फ्रेंड सर्कल हो फैमिली सर्कल हो रिलेटिव सर्कल हो तंकर जो रिलेशनशिप रे सेटा तंकर डेवलप होता है आउ तंकर कंप्लीट जो फ्यूचर होता है इंडिविजुअली होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड आर। देखो कौन रही तार पीक पीरियड रही स्पॉट इन फिजिकल ग्रोथ रही फिजिकल कोऑर्डिनेशन रही टाइपिकल डेली रिक्वायरमेंट्स रही। तो चलते देखा आम द पीक पीरियड देखिए। देखो ड्यूरिंग एडोलेसेंस द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रीचेस इट्स पीक द ह्यूमन बॉडी अटेन्स इट्स फाइनल एंड डेवलपमेंट शेप द मैक्सिमम लिमिट विथ रिगार्ड टू रिफाइंस इन साइज वेट एंड हाइट इज अचीव्ड। Bones and muscles increases to the greatest possible extent, leading to a great increase in motor activity. The growth and functions of all the outer and inner organs reaches its maximum, and almost all the glands become extremely active at this stage। देखो ये कौन कहला ना माने ए पीरियड रे जो कोन ना तांकर जो एडोलेसेंस मानकर जो फिजिकली ग्रोथ तांकर गोटे शिखर रे पहुंची थाए माने डेवलपमेंट रेट इज पीक्स जो तांकर जो बॉडी अछि सेडा कोन हिताय ना तांकर जो डेवलप शेप रे गोटे डेवलप हो जाय तांकर जो बॉडी रो शेप पुडिको तांकर मैक्सिमम जो तांकर रहउची साइज वेट हाइट जो सेगुड़ा सब अचीव हो जाए और जो बोन्स मस्कुलर सेगुड़ा कौन होता है ना इंक्रीज हो जाए पूरा माने इंक्रीज होकर जो ये हो जाए जो सब बोन्स मस्कुल्स अच्छी सेगुड़ा सब माने गोटे इंक्रीज होकर पूरा माने ग्रेटेस्ट पॉसिबल एक्सटेंड लीडिंग अफ ग्रेट इंक्रीज इन मोटर एक्टिविटी रे पूरा पूरा इंक्रीज हो जाए पूरा भल से ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ ऑल द आउटर एंड इनर ऑर्गन्स रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड ऑलमोस्ट ऑल द ग्लैंड्स बिकम एक्सट्रीमली एक्टिव एट दिस स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट देखो स्पॉट इन फिजिकल ग्रोथ। देखो thus adolescence is a period of marked physical growth. There is a great spot which results in sudden increase in both height and weight। ए पीरियड रे कोन हितै ना तंगर जो फिजिकल ग्रोथ है तंगर सडनली जो हाइट आ वेट तंगर डेवलप हो जाय थाए बट इंक्रीज हो जाए आउ तंगर जो कैरेक्टरिस्टिक रहउची जेमती बॉयज को क्षेत्र रे से माने कोन करंदी ना वॉइस ग्रोथ तंगर जो ब्रेड डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ एबिलिटी टू प्रोड्यूस। देखो तंकर जो ग्रोथ तंकर जो ब्रेड अच्छी आउ से माने जो ये करंदी तंगर वॉइस रे गोटे डेवलपमेंट पळे आसे गोटे अलग धरणर पळे आसे। नेक्स्ट देखो गर्ल्स को क्षेत्र में कौन हुए ना तांकर जो इंक्रीज तो हिप्स से डेवलपमेंट हुए माने जो हेयर जपरिक तो युवा सब मैच्योरेशन से माने तो ये सब तांकर जो मन क्षेत्र में डेवलप होता है। दिस रैपिड चेंजेस आर accompanied by increase in the adolescent's motor power and he wants to engage himself in various types of games, sports and other types of physical activity। जहाँ फल कि से गेम खेलवाई स्पोर्ट्स अदर जो टाइप्स फिजिकल एक्टिविटी जो रोचे से गुड़ाक एक्टिविटीज गुड़ा बढ़ी जाए जो से खेलिया को पसंद करी थांती। नेक्स्ट पॉइंट देखो फिजिकल कोऑर्डिनेशन। देखो फिजिकल कोऑर्डिनेशन तांकर केंती थाए फिजिकल कोऑर्डिनेशन बिकम एडिक्वेट फॉर हाईली स्किल्ड स्पोर्ट्स सच एज ट्रैक वॉलीबॉल एंड टेनिस लेट मैच्योर may still be handicapped by poor coordination control and graceful movement is possible for activities like swimming and dancing। नेक्स्ट पॉइंट कौन होना टाइपिकल डेली रिक्वायरमेंट्स। देखो ये कौन रही ना टाइपिकल डेली रिक्वायरमेंट्स आर 3200 कैलोरीज फॉर बॉयज क्षेत्र में देखा जाए एंड 2800 फॉर गर्ल्स को क्षेत्र में देखा जाए। Breakfasts are often skimpy because of haste. As much as 10 hours of sleep may be desirable. Dental care is one of the most common physical needs रही है तांकर। नेक्स्ट पॉइंट देखो कौन अच्छे हमरो नेक्स्ट देखो जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। देखो प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। देखो जो एडोलेसेंस पीरियड पिलांकर जो प्रॉब्लम रोची सेटा देखो ए स्पेशल नोट देखो अकॉर्डिंग टू जेम्स एस रोज adolescence is best regarded as recapitulation of the first period of life. The adolescence no longer exhibits and stability that mark his later childhood. He is barely adjusted physically and mentally, being clumsy and awkward physically and extremely moody in his behavior, living under the delusion that he is the focus of everyone's attention. He is extremely
self conscious and is given to blushing in a word like the infant. He has to begin again the work of adapting himself to his environment. देखो ये कौन कही जेम्स एस रोज कौन कही देखो এই স্টেজটা কোন হইতাই না তাଙ୍କର जो adolescence period अछि ତାଙ୍କର फास्ट स्टेज रे ତାଙ୍କର पुनरावृत्ति ତାଙ୍କ लाइफ रो होची पुनरावृत्ति हेई थाए आ कोन हइताय ना तांकर जो एग्जिबिट्स जो स्टेबिलिटी तांकर कोन हइताय तांकर जो मार्क्ड लेटर चाइल्डहुड को नेकी हइताय आ कोन ना तांकर जो फिजिकली एडजस्टेड हइताय एंड मेंटली से माने एडजस्टेड फिजिकली एंड मेंटली जो माने बहुत बैडली हइताय तांकर आ से माने जो ऑकवर्ड होई जायतांती फिजिकली एंड एक्सट्रीमली मूडी इन हिज बिहेवियर रे माने ऑकवर्ड हेई जायतांती आ कोन होइताय ना तासे तांकर जो समस्त को जो अटेंशन से माने फोकस ऑफ एवरीवनस अटेंशन ही इज एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस एंड इज गिवन टू ब्लशिंग इन ए वर्ड हेई जायताय आ कोन लाइक द इन्फेंट he has to begin again the work of adapting himself to his environment. Next देखो आम देखा फंडामेंटल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस देखो फर्स्ट पॉइंट कौन अच्छी तर पॉइंट गुड़ाक देखी नुँ प्रथम द प्रॉब्लम ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकंड वन इज द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स थर्ड वन इज द प्रॉब्लम ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी फोर्थ वन इज द प्रॉब्लम ऑफ ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फिफ्थ पॉइंट है द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर एडजस्टमेंट सिक्स पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ मैच्योरिटी सेवन पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ सोशल वैल्यूज एट पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो चलते देखिए आम फर्स्ट पॉइंट अच्छी कौन द प्रॉब्लम ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखो एथरे कौन देखिए ना द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट दिस स्टेज इटसेल्फ क्रिएट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर द एडोलेसेंट को भाई एटा कोन ना बिग प्रॉब्लम होई जाय द चेंज इज सो रैपिड एंड सडन दैट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू प्रॉपर्ली cope with it he is neither a child nor an adult and therefore feels awkward in the company of others awkward feel karanti others सहित this poses adjustment problem for him the remedy lies in providing congenial and understanding environment तांकर पई कोन ना remedy होची lies होची in providing environment को understanding बुझाइबा एवं congenial रोजी नेक्स्ट पॉइंट देखो द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स देखो द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स जेम्स एस रोज सेज सेक्स देन इज द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ एडोलेसेंस इफ नॉट ऑफ all life like the overflow of a great river says slaughter it irrigates and fertilizes great tracts of life's territory and the whole business of adolescence education is the long circuiting of the instinct the reduction of its energy into legitimate and useful channels but this is not so easy. The next one, the remedy is not to express but sublimate the sexual instincts. This means channelizing the sexual energy for the attainment of some desirable objective, especially in the field of art, of literature, physically exercise, or keeping busy also keeps in solving these problems. Next one, देखो the problem of emotional instability देखो कौन देखिए an adolescent is emotionally highly unstable होता है इमोशनली तक जो है सेटा कौन होता है हाईली अनस्टेबल होता है he experience intense emotional feelings these mood swings are quite normal with the adolescents but if these are more frequent and are extremely intense in nature they may be an indication of a deep sense of dissatisfaction or frustration maybe that his emotions are being thwarted resulting in frustration and instability of mind. Next one देखो the problem of a sense of insecurity देखो for a balanced development of personality a feeling of security is absolutely essential generally children at the adolescent stage are development dependent upon their parents for the fulfillment of their needs से कोन होइतांती ना तांको पेरेंट्स को ऊपर डिपेंडेंट होइतांती से माने जा चाहितांती सेटा तांको पेरेंट्स माने फुलफिल करि दैतांती they have physical needs intellectual needs emotional needs regarding recreation and needs regarding their friends or social needs. All of these may not be important from the parents' point of views, but they may be very important from the point of view of children. Next one देखो the problem of proper adjustment देखो a balanced personality is a well adjusted personality an individual is required to adjust to his total environment for an adolescence it means adjustment with parents and other members of the family adjustment with the teachers and the educational institution adjustment with society etc due to the reasons inherent in the adolescent and prevailing in the environment and society the adolescents experience a number of adjustment problems. Next one देखो the problem of lack of maturity देखो another important problem of the adolescent is that though he lacks experience and maturity, he is not ready to accept this fact. He definitely has his own intelligence and he has begun to see the world from his own point of view. He is naturally craving of independent thinking and in his actions he has formed a lot of ideas and ventures of transform the whole society. But the difficulty is that he lacks maturity which is by product of experience. देखो ये पीरियड रे कहि ना ताकर एक्सपीरियंस जो सेटा प्रोडक्ट होई थाए से माने जहा दिजे से माने भाबंती जे से माने जहा करूचंती सेटा ठीक करूचंती आ कोन होई थाए ना ताकर मैच्योरिटी ताकर ये थिबारु से माने भाबंती जेतु कॉलेज हो फ्रेंड्स सर्कल हो ताकर किछि गोटे प्रॉब्लम हेइथिबा तो से दिनछडा को से आसी ताकर फैमिली ऊपर माने तार सेटा प्रभावटा पकांती को प्रभावटा जेमिति कि घरे आसी इरिटेट हेजिबा अन्य मन को रागोडा घरे आसी इरिटेट हेजिबा अन्य ऊपर सेटा ये करबा तो से सब दिनस एथिरे देखा जाय. नेक्स्ट पॉइंट देखंतु द प्रॉब्लम ऑफ सोशल वैल्यूज
Every society has its own customs and traditions which it's want to maintain and perpetuate. Every individual has to follow these social values or social code of conduct. But though adolescents may not see eye to eye with those social values, which are out of date and therefore superfluous, his independence of thinking may come into clash with the prevailing values. Next one देखो the problem of economic independence देखो economic independence is fundamental to the development of a balanced personality. It is rather a condition of existence, and adolescents wants to be independent is almost everything, more so in the case of money matters. The educationists in India seem to have paid little attention to this fact. It is not essential that the individual should take up some vacation at the adolescent stage, but it is extremely essential that there should be a bright prospect before them in precious terms, which may say that jobs should be granted, utterly lacks in this respect. The adolescent is not sure about his future even after spending a number of years as studies. This adds to the frustration of the youth. Next point देखो नीड फॉर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एडोलेसेंस पीरियड देखो एडोलेसेंस पीरियड रे स्पेशल स्टडी पे कोन आवश्यकता रही देखो तो एडोलेसेंस इज नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन एडल्ट दिस फैक्ट इज ऑफ्टन omitted by the teachers and parents. At one moment they call him to by young to take an independent decision and interfere with his plans of and on, and at the other moment they look down upon him if he is unable to arrive at a decision which they expect from him. For example, the parents may not permit the adolescent to go along to his friend's house, which is at a distant place, but may send him gladly to purchase vegetables or other household articles from a far off market all alone. In marketing purchase, if he commits any mistake, he is redoubled for behaving like a child. This creates many emotional problems for the adolescents. Adolescence period रे बहुत गुड़े problem देखा जाए थे ना से फ्रेंड्स और को जो चाहूथे फैमिली मेंबर मना करुथे किंतु सेही क्षेत्र रे कोन ता अपोजिट साइड रे कोन ना मार्केटिंग करिया पे पठा जाउतो तांको तो सेही क्षेत्र रे कोन ना से माने टिके इरिटेट हो जाई थांती जेहेतु से माने मैच्योर होई न थांती. नेक्स्ट देखंतु adolescent groups and gangs देखंतु adolescent group जो थाए तांकर गैंग्स थाए जोडा हमें सेटा को कोन कहिताउ गैंग एज बोली कहि थाउ देखंतु गैंग एज कोन देखंतु revolutionary changes occur in a child's social behavior when he starts going to school. In the school he comes in contact with other children whose company is a new society for him. Now he does not like to play only with the children of his neighborhood. He does not like to go to a function or for outing with his parents or older brothers or sisters. He now loves group play instead of individual play. This is the gang age of the child. His social development goes on at fast pace at this stage. At this age. देखो ये कौन कहला ना देखो सी जो स्कूल गोटे शिशु गोटे चाइल्ड कही दे ना सोशल बिहेवियर से चेंज होता है सी जो स्कूल जावा आरंभ करती देखो आ कौन ना स्कूल से जो अन्य पिला सहित कंपनी न्यू सोसाइटी अन्य पिला सहित खेलिया लगती मिसवाक लगती तो से कौन करती ना डज नॉट लाइक टू प्ले से प्ले करने पसंद करती जो चिल्ड्रेन ऑफ हिज नाइबरहुड से कौन करती ना जो चिल्ड्रेन जो नाइबरहुड सहित अच्छा से सहित पसंद कर न था. नेक्स्ट पॉइंट देखो एडजस्टमेंट देखो एडजस्टमेंट कौन रही ना फैक्टर्स ए अफेक्टिंग एडजस्टमेंट एट होम देखो जो एडजस्टमेंट रही फास्ट चलते देखा एडजस्टमेंट कौन देखो फास्ट तार पॉइंट गुड़ाक आम देखा एडजस्टमेंट कौन ना मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट देखो मैन इज ए सोशल एनिमल. He has unique sense of belongingness to a social environment while living as a member of a social group. He comes into contact with people and situations to which he has sometimes to subdue and on which he has sometimes full control. His smooth living depends upon how well he can attain degree of inner harmony in his interpersonal and intrapersonal relationship. से कौन करी ना सोशल एनवायरनमेंट रे से माने पूरा गोटे यूनिक सेंस ऑफ बिलोंगिंग से बसवास करिथांती व्हाइल लिविंग एज ए मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप से माने जेतले सोशल ग्रुप रे कांटेक्ट करिथांती अदर पीपल को सहित सिचुएशन किछि भी हेताउ तो ताको जो हैंडल करिथांती तो सेटा को कोजंदी एडजस्टमेंट पीपल को सहित से माने केमिति एडजस्टमेंट करिवे केमिति रहिबे तो सेही विषय रे कह जाय छी. देखंतु तार रहउची कोन ना फैक्टर्स ए अफेक्टिंग एडजस्टमेंट एट होम देखंतु फर्स्ट पॉइंट तार देखो ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी और होम एटमोस्फियर देखो द एटमोस्फियर ऑफ द होम हैज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन देखो ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द चिल्ड्रेन कम्स फ्रॉम द love and affection and they get from their parents and other members of the family. Their sense of security is also promoted if their needs are properly attained. देखो तंकर कोन तंकर जो नीड अछि सेटा जदी प्रॉपर्ली फुलफिल हे जाउची तो से माने कोन होइतांती ना बहुत खुशी हेतांती. नेक्स्ट पॉइंट देखो एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स देखो एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स देखो द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रेन हैज ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रेन to adjust themselves in society. देखो एटी तंकर पेरेंट्स को जो परि तंकर एटीट्यूड थाए पिला मानको प्रति सेटा कोन करते ना ग्रेट बहुत इफेक्ट पकई थाए सेटा चिल्ड्रेन मानको ऊपर जो तंकर जो एडजस्टमेंट करिया पे सोसाइटी एडजस्टमेंट करिया पे तंकर जो चिल्ड्रेन को ऊपर बहुत प्रभाव पकई थाए. नेक्स्ट पॉइंट देखो
Discord between the parents देखो in the home where the parents are frequently quarreling with each other, the children feel insecure, which is detrimental to their mental health. If the quarrels lead to the divorce, the mental balance of the children is lost and they become maladjusted. देखो if the parents are happy with each other, a very affectionate and comfortable atmosphere is produced in the home, which make the children happy, healthy and well adjusted. देखो এই ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ତାଙ୍କର ଭାବ ସବୁ ମିଶିଥାଏ ପଡ଼ିଥାଏ ତାଙ୍କର ଖାପ ଖୁଆଇଥାଏ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ଙ୍କ କଥା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ରହୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟାକି ହେଲ୍ଦି ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ହାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ଇଫ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଲ୍ ବି adequately met, which will lead to their proper adjustment ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ଟିକେ ଭଲ ଥିବ କି ଭଲ ତାଙ୍କ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଡ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଥାଏ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଡ୍ଟା ପୂରଣ ନ ହୋଇଥାଏ ତ ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ରାଗିବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା, ତ ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଭର ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଟାଇମ୍ସ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବିକମ୍ ଓଭର ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ସେଟ୍ ହାଇ ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସମଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବହୁତ एक्सपेक्ट रखिथांती अचीव करिया ପାଇଁ गोल करिया ପାଇଁ। दिस लीड्स टू मेंटल स्ट्रेन एंड अनएबल इंटेलेक्चुअल लीडर्स ओवर द चिल्ड्रेन। द परपेचुअल strain on the children has a damaging effect on the minds of the children, which may impair their mental health देखो एटा कोन करथाय ना सेटा जो तांको पिल्लांको ऊपर प्रभावटा पकैथांती, जोटा कि तांको पिल्लांको ऊपर सेटा प्रभाव पकाई थाय, को प्रभाव पकाई थाय। जेपरि कि देखिथिबे कहिथिने एटा हमरो एई क्लास रे तमे 90% मार्क आनिबा दरकार, पिल्लांको कहि दिबे तो सेटा आनि पारु नथिबे, तो ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ, ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପକାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲିଂ ଅଫ୍ rivalry and jealousy ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ମେ ଡେଭଲପ ଫିଲିଂସ୍ ଅଫ୍ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ୟୁ ଟୁ jealousy and rivalry with his younger brothers and sisters ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲିଂସ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାଙ୍କର jealousy ଫିଲିଂସଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହୋଇଥାଏ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ୟଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବ୍ରଦର କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟର ଉପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ jealousy ଫିଲ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ମଦର୍ସ ଆଟେନସନ୍ which was previously completely devoted to the first born child is to be shared by the new born child. Thus, the elder child may feel jealous and develop a feeling of insecurity. This may lead to his maladjustment देखो एथरे कोन हेइताय ना जेतेबेले निज झियो को कि पुओ होंतु काहाकु गोटे अधिक भलो पाइतांती तो सेतेबेले अन्य जणे जो पिला तो से सेतरे जेलसी फील करि थांती, जोंथि पई कि जो एडजस्टमेंट क्षेत्र रे प्रॉब्लम देखा जाय थाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन देखो, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस देखो, ए फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस और लोकालिटी ऑफ द होम may also develop a feeling of insecurity in the child देखो एठी कोन कहि ना, frequently change the residence of or locality of the home may also develop a feeling of insecurity in the child. With the change of locality, the child has to constantly change his school and friends. So children have little chance of effective adjustment because they have to constantly adjust to entirely new situations. This leads to development in them a sense of insecurity, which results in their maladjustment and poor mental health. Next देखो, B factor देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजस्टमेंट एट स्कूल देखो, स्कूल जो रुए अफेक्टिंग रुए जो एडजस्टमेंट रो तो सेटा फैक्टर गुड देखो। फर्स्ट पॉइंट देखो, ओवर डोमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ टीचर्स देखो कौन रही, द टीचर्स हु आर ओवर डोमिनेटिंग एंड यूज अप्रेसिव मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द स्टूडेंट्स प्रोड्यूस ए फियर physiosis in the pupil. They give corporal as well as mental type of punishments to the students. This reduces mental suppression in the students by looking their natural expression existing always in the state of fear. This leads to mental conflicts and complexes and the impairment of their mental health. Next one देखो, partial attitudes of teachers देखो, the teachers should always behave in an impartial manner as far as the students are concerned. If he shows unduly favorable behavior towards certain students and in unreasonable harsh and critical towards others, it disturbs the mental balance of the students, which is harmful for their mental health. The teacher should be very careful about his remarks देखो एथरे कोन कहि ना टीचर माने बेले बेले कोन होइतांती ना पार्शियलिटी करितांती, जो माने भलो पडुथिबे तांको बेसी अटेंशन मिलुथबो किंतु जो माने टिके ये डाउन थिबे मिडिल ये लेवल रे थिबे तो से मानको टिके ये करथे, तो ए जो इफेक्टटा रुहे तांगर स्टूडेंट को ऊपर बहुत प्रभाव पकाई थाए। तो ए मैटर रे टीचर मानकर कोन ना बहुत केयरफुली रहिबाकू पड़ी थाए। नेक्स्ट पॉइंट देखंतु, failure in school देखो, failure and a sense of inadequacy have a very damaging effect on the mental health of the students. This results in a feeling of inferiority in the children and they lose heart in the race of life. Such students should not be ridiculed, rather they should be encouraged to do better or excel themselves in certain other fields देखो, failure in school देखो, जो स्कूल पिला माने सपोज फेल होई एंती तो तांको जदी आमे मोटिवेट करबा कि भलो मतो करिया तो से माने कोन डेवलप होबो, जदी आमे सेठी मोटिवेट करि दबा से माने कोन रहि जिवे सेठी आ तांकर डेवलपमेंट होबन जो तांकर विकास क्षेत्र रे
डेभलप हेनी आम तुमको कौन करार मोटिवेट करार अच्छी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो टाइप ऑफ करिकुलम देखो we have more or less a single track system of curriculum in our schools. The curriculum is the same for each and every student. Every student को पाई कौन होइदे ना ये जो curriculum थाए समान थाए. Moreover the curriculum is mainly bookish and theoretical. It is also away from the realities and needs of life. Every students may not be able to fit in this type of curriculum. School curriculum should be meaningful to the students and should satisfy his needs. Next point देखो lack of co-curricular activities देखो the student at the school stage are full of energy and want to be active and busy in one thing or the other. Simply the academic or the class work is not sufficient to keep them active and busy. Moreover, due to lack and of variety, they lose interest in the school programs. The number of co-curricular activities therefore should be provided in the school so that the students are busy all the times and their energies are spent in the educationally useful activities. एटारे कोन कहिजिना ना जो co-curricular जो एक्टिविटी अछि जनरली कि जेमति स्कूल फंक्शन हो तांगर कल्चरल फंक्शन हो कि हमर फाइनली जो फंक्शन हो तो सेतिरे जो स्टूडेंट माने पार्टिसिपेट करनती तो समस्त को हमर कोन करियार अछि प्रोत्साहित करियार अछि मोटिवेट करियार अछि जेमति कि समस्त सेतिरे किछि ना किछि पार्टिसिपेट करि परिबे। तो आम जदि से भल पिला आम मोटिवेट करदेवा जो मैंने ये अच्छा आम जदि मोटिवेट न करिया तो से तो ये करेंगे भी मोटिवेट करार अच्छे जहाँफल कि समस्त एथे अंशग्रहण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो lack of facilities in school देखो there is utter lack of facilities in our schools. Even sufficient number of classroom is not provided in our schools. School library exists in name only. Therefore the academic type of atmosphere is consequently absent from our schools. Even the basic requirements are not provided in the schools. बेले बेले कौन हुए ना स्कूल में सफिशिएंट रूम न थाए क्लास करिया पे जेमति कि गोटे क्लास में 2टा क्लास करि दउचंती तो सेमिति ही होई थाए सफिशिएंट क्लासरूम अवेलेबल न थाए आ कोन हमर जो लाइब्रेरी थाए बुक पढिया पे सेटा केवल नाग ही मात्र थाए जेटा कि सेटा बेले बेले सेटा न थाए अवेलेबल न थाए स्कूल में। नेक्स्ट देखो एग्जामिनेशन देखो द प्रेजेंट टाइप ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन इज also responsible for maladjustment among school children. Examination are the cause of developing a fear complex in most of the students. Failure or making a grade in the examinations also lead to discouragement and frustration. The examination are also responsible for cramming and rote learning on the part of the students देखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी देखो one of the basic factor is the maladjustment of the students is that even after successfully completing their studies they are not sure of getting an employment. The defect is both in the system of education and the economic system which does not provide enough employment opportunities even to the educated young people. This produces the frustration and maladjustment. Next point कौन अच्छी देखो on physiological handling by the teachers. The children are like tender plants. They require very carefully and physiological handling both by the parents and by the teachers. The children must be treating very sympathetically and their various types of problems must be solved and handled with understanding, respected and imaginations. नेक्स्ट देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट देखो एडजस्टमेंट जो हमारे रोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखो तार कौन देखिए हमें मेन एरिया एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट आर द फॉलोइंग देखो तार रोज कौन फर्स्ट रोज हेल्थ एडजस्टमेंट, सेकंड इमोशनल एडजस्टमेंट, थर्ड सोशल एडजस्टमेंट, फोर्थ वन होम एडजस्टमेंट, फिफ्थ वन इज स्कूल एंड ऑक्युपेशन एडजस्टमेंट। देखो प्रथम देखो one is said to be adjusted with regard to one's health and physical development if a child's physical development and abilities are in conformity with those of his age mates and he does not feel any difficulty in his progress due to some defects of incapability in his physical organs, he enjoys full opportunity of being adjusted. Next one देखो emotional adjustment कौन देखो emotional plays a leading role in one's adjustment to self and his environment and individually is said to be emotionally adjusted if he is able to express his emotions in proper way at a proper time. It requires one's balanced emotional development and proper training in the outlet of emotions. नेक्स्ट पॉइंट देखो सोशल एडजस्टमेंट ने कौन से सोशली एडजस्टेड होती माने अदर लोक सहित अदर पीपल सहित से सोशली एडजस्टमेंट होती होम एडजस्टमेंट से करी कौन होम रे जमती कि होम इज द सोर्स ऑफ ग्रेटेस्ट सैटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर्स. द रिलेशनशिप्स among the family members and their ways of behavior play a leading role in the adjustment of a child. All from problematic and delinquent behavior is the result of that adjustment and maladjustment to a great extent is the product of faulty bearing at uncongenial atmosphere at home. Next one देखो स्कूल और ऑक्युपेशन एडजस्टमेंट देखो स्कूल क्षेत्र में भी पिला माने एडजस्टमेंट करथांती जेपरि कि संग संग भीतर जेमति क्लास में बसिबा सिटिंग कोठी बसिबा कोन करिया तो ए सब रे से माने कोन करथांती ना एडजस्टमेंट बहुत टाइप करथांती. नेक्स्ट वन देखो कॉजेस ऑफ mal adjustment देखो there are the numerous factors which are responsible for maladjustment. The causes of maladjustment are closely linked with home, school and society. देखो एतरे तांकर देखो causes related to home or home factors देखो तांकर फर्स्ट वन रोची बैड होम कंडीशन रोची, पुबर्टी और पुअर इकोनॉमिक कंडीशन रोची, पेरेंटल एटीट्यूड रोची, ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स रोची. स्कूल फैक्टर रे कोन रोची सेही परि तांकर प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप रोची, स्कूल फेल्युअर रोची, डिफेक्टिव करिकुलम रोची, एग्जामिनेशन सिस्टम रोची, सोशल फैक्टर मध्य रोची. नेक्स्ट देखो
some of the special factors responsible for it are देखंतु कोन देछि तारो प्रथम फर्स्ट पॉइंट देखंतु तारो repression of natural instincts due to orthodox society. The natural instinct of children are represents. देखंतु second one is lack of recreational activities. Third one is frequent changes of school and locality. Fourth one is miscellaneous causes. Next देखंतु डिफेन्स मेकानिज्म देखंतु डिफेन्स मेकानिज्म कोन देखंतु First, man has a large variety of needs: physical, physiological, social, economical, moral, so on. All of those cannot be properly and adequately, as most of those needs conflict with each other. This causes frustration and produce tension in the mind. Continuous frustrations lead to serious maladjustment or conditions of mental ill health. तार देखंतु तार सम ऑफ द इंपोर्टेंट डिफेन्स मेकानिज्म आर देखंतु तंकर फर्स्ट पॉइंट होची कंपेंसेशन, सेकंड वन इज रेशनलाइजेशन, थर्ड वन इज प्रोजेक्शन, फोर्थ इज identification, substitution, sixth one is sublimation, seventh is representation, eighth is regression, ninth is negativism, 10th is sympathy, 11th is withdrawal, 12th is daydreaming or fantasy. तापरे देखंतु तापरे लीडरशिप देखंतु leadership is an art. It does not belong to one individual but belongs to the whole group, and it is the center for the teaching and learning processes, and teachers is the leader. The performance of the class depends upon the leadership style. देखंतु तांकर देखंतु कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एज ए ग्रुप देखंतु तांकर जो फर्स्ट होची कॉमन गोल रोची, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज मोटिवेशन, फोर्थ वन इज लीडरशिप. देखंतु फर्स्ट पॉइंट देखंतु कॉमन गोल देखंतु द क्लास हैज ए कॉमन गोल. ऑल द मेंबर्स अटेम्प्ट टू रीच द गोल डिसाइडेड बाय द स्कूल एंड द लार्जर सोसाइटी. दे आर बॉन्ड टुगेदर फॉर कॉमन गोल. द गोल ऑफ द क्लास इज वेल डिफाइंड. जो कॉमन गोल थाए से माने को करतांती ना प्रत्येक छात्री कौन होता परस्पर मिसिक डिसाइड करके जो गोटे सोसाइटी से कौन करते कॉमन गोल करते गोटे बॉन्ड करते भितर गोटे बॉन्डिंग थाए टुगेदर आ कौन करते जो गोल अच्छी से कौन करते वेल डिफाइन करते. नेक्स्ट पॉइंट देखो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देखो द क्लास हैज ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. देयर इज होमोजेनेट in the group as regards their age, subject backgrounds. Third देखो मोटिवेशन कौन देछि ना it is implied in the first characteristics of the group. The members of the class are motivated for the achievement for a common goal. common goal पे से प्रत्येक common goal पे से मोटिवेट करवा आवश्यक अच्छी. लीडरशिप देखो द क्लास एज ए ग्रुप एज ए लीडर. द फंक्शंस ऑफ ए लीडर आर डिस्चार्ज बाय द टीचर. देखो टाइप्स ऑफ लीडरशिप देखो लीडरशिप स्टाइल्स आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द लीडर, द ग्रुप सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम ऑन हैंड. डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस सिचुएशन ए लीडर एक्जिबिट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स. देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप. फर्स्ट वन इज डायरेक्टिव लीडरशिप, सपोर्टिव लीडरशिप, थर्ड वन इज परमिसिव लीडरशिप. देखो फर्स्ट वन इज देखो जो रही है डायरेक्टिव लीडरशिप. देखो इन द डायरेक्टिव लीडरशिप द लीडर प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द वर्क सिचुएशन बाय एस्टैब्लिशिंग specific expectations for the subordinates. He lets the subordinates to know the goal, provides the needed guidance, schedules the work to be done, and instructs for the standards of performance. The leader uses force, authority, domination, and command on his followers. Therefore, this style is also known as authoritarian style. देखो तांकर को एडवर्टाइजमेंट देखो देछि the leadership provides goal of the organization, moral, material, and guidance. Tharo disadvantage is kona the style of leadership causes intergroup conflicts, frustration, especially when the leader is not able to communicate the goal, objectives, and give correct direction to the followers. Next point देखो supportive leadership. देखो supportive leadership कौन ना the learn supportive refers to help, sympathy, and encouragement. The leader is this style has friendly relationship and so concern for the needs, status, and well-being of subordinates. देखो से कौन करथांती जे supportive leadership जने कहिथांती ना से माने sympathy देखैथांती, encouragement करिथांती आ कोन ना से माने friendly relationship रखिथांती आ तंका concern जो status concern जो status समस्त सहित भलो होइथाय. The leader is approachable and keeps trust on the followers. He treats all members as equal. से कौन करिथांती सब मेंबर मानक सहित equally behavior करिथांती. नेक्स्ट पॉइंट देखो परमिसिव लीडरशिप. देखो दिस स्टाइल इज आल्सो लेजिस फेयर और फ्री पेन लीडरशिप स्टाइल. देखो लीडर ऑफ दिस स्टाइल एक्चुअली अवॉइड्स इज authority and position and relinquishes it is subordinates. This leader avoids responsibilities and power. The leader delegates his entire authority to subordinate and expects them to perform his duties and responsibilities. Next देखो next देखो here are 5 qualities teens can practice to enhance their leadership ability during their teen years and to strengthen the skill as they approach adulthood. देखो
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟି 5 କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଆବିଲିଟି ଡ୍ୟୁରିଂ 2 ଇୟର୍ସ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଆଜ୍ ଦେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ସେମାନେ ହେବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କର ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ହାଭ୍ ଏ ଭିଜନ୍, ଫୋର୍ଥ ଇଜ୍ ମୋଟିଭେଟ୍ ଅଦର୍ସ ଟୁ ସି ଦ ବିଗ୍ ପିକ୍ଚର, फिफ्थ इज टीम वर्कर। देखो फर्स्ट पॉइंट जो प्रोएक्टिव रोची सेटा करना ना ए लीडर मस्ट टेक एक्शन एंड टेकिंग एक्शन इज ए हैबिट। इट इज गुड टू एनकरेज टीम्स टू टेक एक्शन और मैटर्स that are important to them. It is also good to teach them that their actions can and do make a difference in the world. Second point जो अच्छी positive thinker करना ना positive attitude extremely important. This too is a habit and optimists are always more fun to follow than pessimists. Next point देखो have a vision। देखो part of being a leader means having a vision. The vision is a place where the leader wants to go and to lead those that share his dream. Encourage your team to be a part of the community and be involved with current issues. Next one देखो motivate others to see the big picture. To be a leader, one must be able to motivate those around him or to see the vision that he see. The better the person's ability to communicate ideas to a team, the better his or person will sound to them. Next one देखो team worker देखो a successful leader arrives at the finish line to gather with his or team and gives credit to all team members. The increases the team's respect for their leader, encourage your team to share credit and author articles. तो यह थिला अपन मानकर बीएड फर्स्ट सेमिस्टर रो 4th यूनिट पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट रो। आई होप आपण मानकु भल लागिवो। लाइक शेयर कमेंट करिया को भी जमार भी भूलंतु नहीं। जदि आपण माने एही रिलेटेड वीडियो आउर भी देखिया चाहउचंती आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु, बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु, जहा फल रे आपण माने हमर चैनल नु नुवा नुवा क्लास पाई परिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग।